नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स जो है देख रहे थे। कन्वेंशनल सीरीज हमारी चल रही थी। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल से कैनवास आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन ऑफ द डे, शो दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी शो दैट द मैक्सिमम efficiency for a jet striking at the center of a at the center of a single single symmetrically curved vein moving with a velocity u moving with a velocity u is given by 16/27 cos square theta upon 2, where where theta is the curved curved angle of the vein. चलिए, now here we have force exerted by the jet on the curved vein. So here we have the formula F is equal to mass flow rate multiply with V1 minus V2. So the F is equal to density into area, V R relative velocity, V minus U minus of minus V minus U times of cosine theta. F is equal to density into area relative velocity V minus U ही होता है, तो here whole square multiply with 1 plus cosine of theta. यहाँ तक कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी का तकलीफ नहीं सर. So now moving ahead, we have the formula for power produced by jet is equal to force into velocity. So the power is equal to density area V minus U का whole square 1 plus cos theta multiply with U. So therefore efficiency is equal to power divided by half mass flow rate V1 square, which is density into area V minus U का square 1 plus cos of theta to U upon half of density area velocity into V square rho AV for the mass flow rate. So the efficiency must be 2 times of V minus U का whole square 1 plus cosine of theta upon
v cube v cube. Now u upon v is equal to density. So here we have the efficiency is equal to 2 times of 1 minus rho का square 1 rho times of 1 plus cos of theta. Now for the maximum efficiency क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं d by d रो एफिशिएंसी को जीरो के इक्वेट करो सो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर गुणे का फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ये पावर का निकाले ना प्लस 2 रो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 1 माइनस रो और रो का -1 इज इक्वल टू 0. फाइनली रो इज इक्वल टू 1 एंड रो इज इक्वल टू 1/3. 1 जो है नॉट पॉसिबल का केस हो जाएगा. सो द मैक्सिमम efficiency is equal to 2 times of 1 minus 1 upon 3 का full square multiply with 1 upon 3 1 plus cos of theta. Now maximum efficiency is equal to 8 upon 27 into cos square theta upon 2. So the maximum efficiency 16 cos square theta upon 2 upon 27. Easy, that's your final value. Now moving ahead for the next question. Question बोल रहा है a single jet Pelton turbine is required to drive a generator to develop 10 megawatt. The available head at the nozzle is 762 meter. Assuming electric generator efficiency 95%, Pelton wheel efficiency 87%, coefficient of velocity is equal to 0.97 mean bucket velocity. Mean bucket velocity 0.46 of jet velocity outlet angle of jet velocity outlet angle of bucket
15 degree, and the friction of the bucket reduce the relative velocity, reduce reduce the relative velocity by 15%. Find the following. Find the following. फर्स्ट वन बोल रहा है द डायामीटर ऑफ द जेट. सेकेंड वन द रेट ऑफ फ्लो of water through the turbine. Next one, the force exerted by the jet. The force exerted by jet on the buckets. The ratio of mean diameter to the jet diameter is not to be less than 10. Find the synchronous speed. Find the synchronous speed for generators at 50 cycles per second, and the corresponding mean diameter of runner. चलो एक बार क्वेश्चन आपके लिए पूरा दिखा देते हैं. A single jet Pelton turbine is required to drive a generator to develop 10 megawatt. The available head at the nozzle is 762 meter. Assuming electric generator efficiency 95%, Pelton wheel efficiency 87%, coefficient of velocity 0.97, mean bucket velocity 0.46 of jet velocity, outlet angle of bucket is 15 degree, and friction of the bucket reduce the relative velocity of 15%. Find the following: the diameter of the jet and the rate of flow of water through the turbine, and the force exerted by the jet on the buckets. If the ratio of mean diameter of jet diameter is not to be less than 10. Find the synchronous speed for generators at 50 cycles per second and the corresponding mean diameter of the runner. Okay, so shall we move ahead? Yes, definitely. So सबसे पहले आपका दे रहा है मैकेनिकल. पावर आउटपुट देख लेते हैं. मैकेनिकल पावर
आउटपुट क्या हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रिक पावर टू द जनरेटर एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय जनरेटर एफिशिएंसी। तो P is equal to 10 upon 0.95. So the value comes out to be 10.53 megawatt. Now efficiency of wheel. So next part, Pelton wheel efficiency, which is power upon rho g QH. Now only value of Q if we find out. So the power upon rho g H into efficiency. So putting the value 10.53 megawatt means 10 raised to power 6 divided by 0.87 into 10 cube into 9.81 762. So the value of discharge is to be calculated after this, 1.62 meter cube per second. Next calculation for the velocity is equal to CV times square root of 2gh. So the value is to be coming out 118.6 meter per second. After that, this charge is equal to CV times root 2gh into pi by 4 d square. Ultimately a1 b1 ही लिखा हुआ है. So putting the value 1.62 is equal to 0.97 into square root of 2 into 9.81 into head is 762 pi by 4 times of d square. Now after this we have to calculating the value over the d. कितना आ जाएगा diameter 0.132 meter and E1 is equal to 118 times 6 meter per second. So in the case of Pelton wheel, it's a whirling velocity. Now triangles construct करेंगे inlet velocity triangle और outlet one में. Pelton wheel है तो bucket में जो है at the centrally hit करेगा, जहाँ पे चलिए नामकरण करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा PW1 is equal to V1 whole and soul, या कि फिर combo of U1 plus VR1 relative 1, यहाँ पे exit 1 VR2 V2 PW2 U2. PF2. All the velocities are to be mentioned over here. Now inlet and outlet velocity triangles are to be constructed over here. Now for the calculation,
we have the datas u1 by v1 is equal to 0.4 times of 0.46 and u1 u2 initial velocity of the jet 0.46 multiplied with 118.6 v1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका वैल्यू 54.56 मीटर पर सेकेंड। देखो कैलकुलेशन जो है ना टर्बाइंस की मोर और लेस सब एक ही टाइप की रहती है। फ्रॉम इनलेट वन से इनलेट से आपका हो जाएगा VW1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 118.6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली जेट में स्ट्राइक कर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका V1 एब्सोल्यूट माइनस U1 118.6 माइनस 54.56 is equal to what 63.94 meter per second. Now VR2 is equal to 0.85 times of VR1, which gives the value over 54.35 meter per second. Now moving ahead, the next part, the आउटलेट वेलोसिटीज को हम कंपेरिजन करेंगे ट्रायंगल से। वर्लिंग वेलोसिटी एट 2 इज इक्वल टू u2 माइनस vr2 cosine of beta 2. So here we have the beta 2 is equal to 15 degree 15 degree. Whirling velocity at 2 is equal to 54.56 minus 54.35 cos 15 degree 15 degree. Now whirling at 2 is equal to getting value 2.06 meter per second. Now force exerted on the bucket F is equal to rho q times of VW1 minus VW2. Alright, so putting the value normally here, क्या वैल्यूज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 10 क्यूब into 1.62 multiply with 118.5 minus 2.06. Now the force value is equal to 188.63 kilo Newton. Now assuming capital D by small d is equal to 10. Now the capital D is equal to 10 into 0.132 1.32 meter. 1.32 meter. Now U is equal to pi dn pi 60 pi dn times of 60. So the value of n is equal to 54.56 into 60 upon pi into 1.32. So the value is to be 789.51 rpm. Apart from that, frequency is equal to Pn by 60. So overall P is equal to 60 into 50 upon 789.51 is equal to 3.799. Right. Now since the pair of pole cannot be in friction, so P is to be taken as 4. Correctly match. Now n is equal to revolution के लिए 60 multiply with 50 upon the 4, which gives the rpm 750 rpm. Now d diameter is to be the revised one is equal to 60 times of u upon pi
n is equivalent to 60 into 54 0.56 division over the 5 times of 750. Finally value is to be 1.39 meter, and the ratio over the capital D by T is equal to 10.53. That's the final calculation all over here. इतना ही रखते हैं साथियों आपका सेशन। आपको एक काम करना है, क्या आपको जो है ना पीएम क्लास है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू साथियों।